So we are live. Assalamu alaikum everyone. This is me Ibrahim and welcome to another podcast. Today we have the amazing singer, the charming voice of Pakistan, Zeb Bangash with us, a good friend of mine. We've been planning to do this podcast from a long time ago, but finally we are here and today we have Zeb Bangash and you can ask her, you can comment down your questions and I'll also be asking about her life, her singing journey and all. And I think we should start with who is Zeb Bangash actually, in her point of view, what she considers herself, and how much successful she considers herself, and what are the goals. कितना successful होना चाहती हैं मैम जेब बंगश, बताएं Oh my मैम. God. वेलकम. सबसे पहले आई एम सॉरी, मैं आपको वेलकम कहना चाहूंगा. आपने हमें ये टाइम दिया, थैंक यू सो मच. और मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है ये व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगी आज की पॉडकास्ट. थैंक यू, बहुत शुक्रिया इब्राहिम. हम लोग मोस्ट वेलकम. इंस्टाग्राम दोस्त हैं क्योंकि हम लोगों ने या इंस्टाग्राम पे कनेक्शन किया एंड वी हिट इट ऑफ एंड it's really nice, you know. I haven't been very active on social media for many years. तो अभी during the lockdown जब और कुछ करने को नहीं होता था, so in order to connect, I had to learn how to get on these platforms. And it's been such a wonderful experience. And part of why I loved it so much is because I get to make friends like you, such थैंक यू. smart people, out there, young people out there doing amazing work, creating great contents, raising great थैंक यू questions. सो मच. एंड मेरे लिए बहुत एक ग्रोथ का एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मुझे बहुत हिम्मत मिली है कि मैं अपनी बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेके जाऊं. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू. Always a pleasure. Thank you so much. And mashallah, you're such a humble person. And when I contacted you, you were so nice and you replied, and I was so much happy. Like, uh, I was like, celebrities are cool, man. I thought the celebrities might be some ego Like fight person. she's not cool. No, no, she is cool. She is absolutely cool. But I was like imagining and fantasizing it a lot, but you were so nice. So I'm blessed to see that gesture from you, and I'm blessed to have a friend like you, Ma'am Zeb. So let's move on to the second thing which was evolving in my mind, which is that how Zeb Bangash became a singer. I've watched your interviews. You told that your family has your some of the people from your family has a good voice, and your nani, I guess, had a good voice. You were used to sing with her, and I was really amazed to hear that. But when did you actually decided to make it as a profession? Because you hadn't planned it to make it a profession before, but you dived into it later. How that thing happened, what was going in your mind, and how you made this decision? एक्चुअली ये दिस डिसीजन आई डोंट थिंक कि मैंने खुद बनाया था. आई थिंक ये डिसीजन ऐसे हुआ कि आई थिंक all of us, we felt this more during this past year during the lockdown, is that we make certain plans for ourselves, but the universe has other plans and we must adapt. And I think Yeah. that you're very fortunate when those plans align with your like deep desires. मुझे हमेशा Hmm. मतलब गाने का शौक था. मैं गाती भी थी. मतलब हम लोग मेरे पास एक म्यूजिक टीचर भी थे Mhm. और इस तरह से. लेकिन ये कि कभी मैंने उसको उस तरह से I never thought of it as something that was that I was Hmm. going to do as a profession. But then somehow I Hmm. was a banker, and then I was working in a business, and without me really putting my work out there, just like you, we were sitting in our homes and making songs on and sharing them with our friends on the internet. And actually internet ka bahut bada haath hai. Like we became artists Hmm. because of the internet, because we didn't realize that people were loving um, our work so much. So that's how it Hmm. happened. And we had a record deal, then we got into Coke Studio, then we started touring, then I started Yeah. doing my own. So that's what it is. Hmm. But I think the true, like the point where I really started considering myself a singer was when I started
training with my Ustad Nasiruddin Sami. So when I started training with him is when I really felt that, okay, Mashallah. wow, this is something that I'm going to do as a serious vocation, not just see where the market goes or whatever, just like really dedicate myself to this profession. Hmm. Hmm. Mashallah, mashallah, very nice. And there's another thing that was going in my mind, that is, what category are you lying in? होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये बंदा इस तरह का है, ये बंदा बहुत पार्टी करता है, या ये बंदा बहुत लेजी रहता है, घर में सोने की आदत है, ये वो। तो आप किस टाइप की हैं? लोगों को अगर ऐसा ख्याल आता हो कि मैम ज़ेब को क्या चीज़ पसंद आती होगी, क्या आपको पार्टीज वगैरह पसंद है, या वो जो आपके सूदिंग से गाने होते हैं, आपका उसी तरह की नेचर है, किस टाइप की है? क्योंकि आपका मैंने कभी एक वो होता है ना, दिलरुबा नाराज़ी, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जो होता है ना, हाइप दे देने वाला, आपके मूड को बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में ले जाने वाला, उस टाइप का मैंने गाने कम सुने आपके, बहुत सूदिंग और बहुत मज़े के। वो मैंने एक इंटरव्यू में भी लाइन सुनी थी, कोयल जैसी आवाज़, तो वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपकी उस तरह की मज़े की सी आवाज़ है। तो आपकी किस तरह की नेचर है? नेचर मेरी एक्चुअली एक और मेरा गाना है डोंट बी सिली, जो कि बाजी मूवी में था, which was like also very अच्छा अच्छा, it was a pure dance track which I had a lot of fun singing. वाह। तो ये नहीं, मेरी एक्चुअली नेचर दोनों तरफ है। मैं कभी बहुत बड़ी पार्टी एनिमल नहीं थी। आई लव टू गो आउट, आई लव टू हैव अ गुड टाइम, एंड एक्चुअली आई लव टू, मतलब मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद है। So, सेम I'm एज not a मी। serious minded person at all. I love to just like joke around and all of that stuff. So and be around people, जितने लोग होता अच्छा है। So ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन when I have time to myself, मुझे वो भी बहुत पसंद है। So I actually I enjoy वेरी नाइस। things, like nowadays, and especially during the lockdown, like having space to myself, then I can really meditate, I can do my riyaz, I can think about things. So dono cheezein I enjoy. I'm also, I can be very lazy and I can be a workaholic. दोनों चीजें होती हैं, like हमारा काम भी वेरी नाइस। क्योंकि it's in spurts, right? So any creative work, it's not like a regular job where every day you wake up at 9 at 7 and you go to you're at work at 9 and you come back at 5. हमारा तो ये है कि जब काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, और फिर when there's a lull, then it's like quiet, then you can use your time as you wish. So when I'm in the work mode, I'm a total workaholic. And then when I'm not, I'm extremely lazy and like, a couch potato, and I just do what I do. But I like nature and I like to do things around nature. So I like everything. Hello. Hello, can you hear me? I guess I'm having an interruption. इंटरनेट शायद थोड़ा सा खराब चल रहा है। आपकी आवाज़ काफ़ी लेट पहुंची है मुझे, और अभी आपकी स्क्रीन स्टॉक हुई हुई है, बट मैं 1 मिनट में अभी रीजॉइन करता हूँ। जी। Yes, ma'am. Zip. So the next question I might ask is what do you think about the youth and the digitization of Pakistan, and what is the perspective about digitization of Pakistan specifically? Because internationally तो दुनिया में बहुत ज़्यादा digitization चल रही है, यूएस में भी और भी बहुत सारी जगहों पे हर दिन कोई ना कोई नई इन्वेंशन आ रही है, जिंदगी और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। बट आप इसे कैसे कंसिडर करती हैं, और क्या कोई हमारे लिए, अगर आप कोई बाउंड्रीज अगर थोड़ी सी सजेस्ट करना चाहें कि किस तरह से हम इंटरनेट को यूज करें तो यूथ के लिए बेहतर हो सकता है? आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज मेरे
जो है ना व्यूअर्स, उसमें ज्यादातर यूथ भी आती है और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज ये जो क्वेश्चन है इसको सुनने में काफी इंटरेस्टेड होंगे। तो इसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही लो फाई इंसान हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले सिर्फ कुछ चंद सालों में मैंने ये सोशल मीडिया वगैरह भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक तरह से मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये है कि are you there, Brian? Hello? Yes, ma'am. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. So yeah, I was just going to say, Okay. at one level, I am really excited about the opportunity of like the interconnectedness of people all over the world, and especially of the youth. I think in many ways, you guys are living a life that is completely your own. We sometimes, like, people who are from another generation may not be even able to understand what you all are going through, because there's so much that you talk about, there's so much you're exposed to, there's so much that you express that is not happening at home or at school, it's happening on the net. So उस तरह से I think ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, और मैंने आप जैसे young लोगों में बहुत एक उसका एक बहुत positive वो देखा है कि you're so smart, you're so entrepreneurial, you're doing things, you're creating a space for yourself, and you're engaging with the world in a very positive way. उसका सिर्फ एक जो backdrop मुझे मतलब नजर आता है ना, एक जो like a kind of a negative जो मुझे नजर आता है, वो ये है कि बहुत सा जो है ना ideas of like एक तो ये है कि ये cancel culture बहुत ज्यादा है उसमें, कि किसी को कोई चीज अगर अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आई, तो उसको ट्रोल कर देना, और एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो मतलब अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आती, बेशक वो अच्छी चीज, मतलब आप हो सकता है वो बहुत बुरी चीज हो और किसी को भी नहीं पसंद आनी चाहिए, लेकिन वो एकदम से जो एक दूसरे को कैंसिल करना और एक जजमेंट है ना, that I find very scary. And to be honest, I think it's not good for our minds, it's not good for our souls, it's not good for our general well-being to be in such a kind of, jo ek idea of being able to disagree with someone without it becoming such a big thing, that has ended. Not Exactly. ended, but it's become lesser than before digitization, I feel. Exactly. Judgment, everyone has an opinion and everyone can just show it, and people, and मुझे ऐसे भी लगता है कि sometimes people are just saying things for the sake of saying them. That's one. The other thing is the idea of what is cool, and वो वाला जो pressure है ना, क्योंकि होता ये है कि a lot of these platforms जैसे Instagram वगैरह में जिस तरह से celebrities या known लोग अपनी जिंदगी दिखाते हैं, असल में उनकी जिंदगी ऐसे होती नहीं है। बबल एक डिफरेंट बना देते हैं। हाँ, वो मतलब वो झूठ तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वो ये होता है कि वो क्यूरेट करते हैं अपनी जिंदगी ताकि आपको वो शाइनी लगे और आप उनको फॉलो करें। लेकिन अब फोन के पीछे क्या है, तो वो तो किसी को नहीं पता ना, कि वो मतलब मैंने बहुत से ऐसे खुद देखा है कि रोने के बाद आप बड़ा यूं किस्म का कर देते हैं कि look at my life, I'm looking so great, and that in some ways it's good that you're spreading positivity, but जैसे आपकी बात कि हमें ऐसे लगता है कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सक्सेसफुल हो गए कि we can never reach that, and then you start judging your own life, and that I think has made a lot of young people dissatisfied. It has made a lot of कंपैरिजन करना शुरू कर सकते हैं, वो फिर बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता जाता है। डिप्रेसिंग हो जाता है, और इतने यंग लोग मैं देखती हूँ डिप्रेस्ड होते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो ये नहीं है, मैं आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, आई एम नॉट स्टाइलिश इनफ।
तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये एक जरिया है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए और अपने आप को आगे ले जाने के लिए. इट्स नॉट टू मेक आवरसेल्व्स लुक एंड फील बैड. Number one. Number two, and finally मैं ये कहूँगी, as someone who has not grown up with screens, please, I know it's very difficult, but please take out some days where you do not spend any time with screens. You know, शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी जो कि probably you won't have been able to experience. That's it. Yeah, exactly. As you might remember, that I'm 16-year-old and I'm currently working with some government officials to for the digitization of Pakistan. So I was really interested to listen to the answer, and it was really satisfying and makes sense. So now I would move to the next question. That is, what are you planning to do next? What are your upcoming projects, and what is going on in Zeb Bangash Live? What is she planning actually? Oh my God, it's such a secret, but I shall share with you. Uh, so Okay. there's many projects. There's a song that I've done. My song with Harun Shahid that I did for Varna, 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗆, that did really well. And then at Eid we made this song, this tribute to 𝗪𝗵𝘆, which also fans Yeah, really liked. So then a lot of us, exactly. were saying, a lot of fans were saying, we want you to do more work, want you to do more work. So this time around, unke liye, the good news is that we will be doing something soon together, which you'll see, inshallah, in the spring. Mashallah. And then, Inshallah. a lot of my like Pathan fans and Pashtun fans all over have been wanting me to do more songs after 𝗪𝗪𝗏 in Pashto. And I'm doing some songs with this very amazing singer who was also on Coke Studio, 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗆. So I've done a series of songs with him, inshallah, which will be coming out. And then after �rosheh, a lot of fans from Kashmir have been saying that they want to hear more songs from Kashmir. So then I've also recorded some songs of Kashmir. And then some other songs as well. So that's, I've told you, like, a lot of songs are coming, inshallah, in this year, if all things work as we planned. But you never know. Mashallah. Yeah, mashallah, that has made me even more excited. Actually, I'm not a Pathan, but जो मैंने आपका पहला गाना सुना था ना, वो था दिलरुबा नाराजी. And from that day, I was so much obsessed with your voice and so much obsessed with you. And when you became my friend, I was really happy कि ये वो है जिसका मैंने गाना उस फलानी वेडिंग पे सुना था, उस दिन सुना था. I was really like a मैं फ्लैशबैक में पहुंच चुका था. इट वाज रियली लाइक गुड मेमोरी. बहुत ही मजेदार गाना था और बहुत एनर्जी वाला. समझ नहीं आता था, पठान नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत पछतो है, कुछ दोस्त हैं तो वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन जो सुना इतना वो था मजे का गाना कि मुझे मजा आ गया वो सुन के, और बहुत टाइम तक मैंने अपनी प्लेलिस्ट में रखा हुआ था, सुनता रहता था. तो आई वुड लव टू हेयर दैट सॉन्ग फ्रॉम यू इफ यू कैन. थोड़ा सा लिटिल बिट. Sure. Thank you. दिलरुबा 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 नाराजी पखंदा नाराजी खल्क और यार मिलाड़ो बेवफा और अम्बिया नाराजी पखंदा नाराजी और अम्बिया नाराजी ओ दिलरुबा नाराजी जानान मिलाड़ो लाड़ो दबल चाशो जानान मिलाड़ो लाड़ो दबल चाशो خوږې نغمې به اوس رقیب تاره وینا خوږې نغمې به اوس رقیب تاره وینا دلربا
दिलरुबा 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 नाराजी पखंदा नाराजी खलकुबोरे यार मिलाड़ बेवफा और अम्बिया नाराजी पखंदा नाराजी और अम्बिया नाराजी ओ दिलरुबा नाराजी और अम्बिया नाराजी पखंदा नाराजी और अम्बिया नाराजी ओ दिलरुबा नाराजी. Mashallah, it was an amazing song, mashallah, and your voice made it even more amazing. और मेरे कुछ यहाँ पे व्यूअर्स में से पठान भी हैं, तो हमारी एक फ्रेंड है मानूर खान, वो कह रही है बेस्ट सॉन्ग एवर. तो आई वुड लाइक टू एग्री विद दिस कमेंट. बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग है. और भी बहुत सारे यहाँ पे मेरे दोस्त कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा. और इसके अलावा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज एन इन्फ्लुएंसर, आप क्या समझती हैं कि कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है जो कि ऑफ स्क्रीन चल रहा होता है? वो लोगों को तो नहीं नजर आता, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, मेहनत होती है उसके पीछे, प्रैक्टिस होती है, वो सारा कुछ होता है, फिर कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, वो सारी चीजें होती हैं. तो हाउ इज इट एंड हाउ टू एंजॉय इट एक्चुअली? क्योंकि वो एक जॉब ना लगे ना, जॉब ना लगे, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, एक इंडिविजुअल आप काम कर रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप उस चीज को पूरी तरीके से उसी तरह से एंजॉय भी करें. तो हाउ डू यू मैनेज इट? I think मेरे लिए it's very easy because everything is linked to my work, which is my singing, and my singing is my passion. तो उस तरह से मेरे लिए सबसे मुश्किल बात है ये टेक्निकल चीजें उनको ट्रिवर्स करना और इस तरह से. But then I have friends like you, around थैंक यू. me who then help me and say नहीं नहीं इसको आप edit कर सकती हैं खुद से and things like that. ये Yeah. hashtag ऐसे hashtag नहीं use करते इस तरह से. So they help me out with that. But the actual thinking up of things to say or things to share, that is very easy for me. Also मतलब बीच में बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा था कि try and be like this person, try and be like that person. I think this influencer thing can only work long term. Maybe short term you'll get a lot of people following you, but I think long term to have a true like authentic followers and base, you need to be yourself always. Exactly. तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को अपना आप ही रखना है और do things, share things that are true to you, और फिर मजा भी आता है, and even like there's a truer version of yourself out there. बिल्कुल सही बात है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई डू, एंड आई स्टार्टेड माय इन्फ्लुएंस अराउंड 1 year और 1.5 year ago. तो तब से ही मैं ये कोशिश कर रहा हूँ. इवन जब पेंडेमिक आया तो फिर और ज्यादा इस चीज को मैंने गौर करना शुरू कर दिया कि जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होता है, जो मेरे साथ आता है, मैं उससे पर्सन टू पर्सन एक अच्छा कनेक्शन बना सकूं. चाहे वो कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाला बंदा हो या कम फॉलोअर्स वाला हो, मेरा उसके साथ ऐसे ही कनेक्शन हो जैसे वो मेरा एक अच्छा दोस्त है. और मैं सबको एक दोस्ती वाला मैसेज स्टार्ट में भेजता हूँ, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, ताकि वो एक ऑफिशियल फ्रेंडशिप हो जाए. और फिर उसके बाद दोनों को पता हो कि भाई हम अच्छे दोस्त हैं. उसके बाद फिर ताकि वो कंफर्टेबल भी हो सके चीजें अपनी शेयर करने में. और फिर उससे मेरी इन्फ्लुएंस भी डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह बेटर होती जाती है, और सेटिस्फैक्ट्री एक इन्फ्लुएंस है मेरी. मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर कभी नहीं बनना चाहता जो बस नाम का हो, उसके व्यूअर्स तो बहुत ज्यादा आते हो लेकिन नीचे बस कमेंट्स में हेट कमेंट्स ही आते हो. तो वो वाले व्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे वाले चाहिए. जो अच्छे से आते हैं वो बैठते हैं, हमारी गपशप को सुनते हैं, ये पॉडकास्ट देखते हैं. और एक और कमेंट यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये पश्तो में लिखा हुआ है, तासो जमुंग फखर ये जी, आप हमारी फखर हैं. आपको तो पूरी पश्तो आती है. नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आती एक्चुअली. माय मदर इज पश्तून, तो थोड़ी बहुत आती है. मदर की जो फैमिली लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, उन्हें भी इतनी कोई नहीं आती, लेकिन दोस्तों वगैरह से हो जाता है ना, जब कम्युनिटी में होते हैं तो सीख लेते हैं फिर.
ये अब सारे अली को प्लीज मेरी तरफ से भी प्लीज थैंक यू एंड थैंक यू। जी मानूर जी, इंशाल्लाह मानूर से कहें आई एम जी, वर्किंग ऑन इट मानूर इंशाल्लाह maybe by इंशाल्लाह। summer you'll have another song like well I don't know like Dillo हम्म song of हम्म of that आई एम type. रियली हैप्पी। Yeah. So, like to ask you a question that is, how has pandemic affected your life? Has it been positive? Has it been negative? किस तरह से आपकी पेंडेमिक में लाइफ चेंज हुई, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता हो पेंडेमिक में इवन बेटर हो गई हैं, जैसे कि अब जूम वगैरह का और इस तरह के लाइव स्ट्रीम्स हैं जो कि हम घर से बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप इस चीज को सोचें तो आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी इसमें पेंडेमिक में? और ऑब्वियसली लॉस जो हुआ है लोगों का वो तो सबके लिए ही एक अफसोस है, लेकिन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपकी लाइफ में किस तरह से रहे पेंडेमिक के? तो मतलब बड़ा ही मतलब एक अहम वक्त रहा है ये, मतलब इन द सेंस के एक तो ये था लॉस था, और फिर ये था कि बहुत डिस्कनेक्ट था, यू नो, और बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो ये जो तीन चीजें थी इसकी वजह से बहुत आई थिंक एक जहनी तौर पे हम लोग काफी डिस्टर्ब हुए हैं, और कुछ अच्छे महीने गुजरते हैं, फिर कुछ वो स्लम्प आता है, और एक जो है एक तरह से अपनी फ्रिजिलिटी का एहसास होता है कि हम इंसान होते हुए हम एक्चुअली कितने फ्रैजाइल हैं। हमें लगता है कि हमने बड़ा कुछ कर लिया है और बहुत पहुंच गए हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो कि हमें नजर भी नहीं आती, उसने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पे ले आया है। तो ये एक बड़ी एक बात थी। दूसरी बात ये कि उसके जो अच्छे असरात हुए हैं वो ये हुआ कि सब लोग जरा अपनी जो नॉर्मल चीजों से हट के बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं। मतलब आप औरों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये था कि यू आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट एंड यू आर फोर्स्ड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैड, and बिल्कुल सही बात। that you never really, you know, like for instance, a lot of people who would say I don't want to go to this family wedding. Guess what? You can never, like, you know, like you can't go to weddings anymore, you can't see that family anymore. So अब उन्हीं वेडिंग्स को मिस कर रहे होंगे यार, कोई तो वेडिंग हो मिस जाए। कर रहे हैं बिल्कुल। और वही जो कि उफ फिर उस पार्टी में बुलाया, अब आप वेट करते हैं, या ऐसे कि लोगों का जो फोन नहीं उठाते थे या वो नहीं करते थे, तो अब यू नो वो कोई भी बिजी नहीं रहा, और सब लोगों के पास वो वक्त है। और दूसरी बात ये कि जज करना हम लोगों ने अपनों को खत्म कर दिया है। जैसे पहले लोग बहुत लड़ाई करते थे, मैं तुम्हें फोन किया था, मैं तुम्हें वो भेजा था, तुमने ईमेल नहीं देखी, तुमने व्हाट्सएप। अब ये है कि सब लोग एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं कि वो अपने टाइम से अपने तरीके से आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो ये बड़ी अच्छी बात रही है आई थिंक इन ह्यूमन इंटरेक्शंस, और जनरली हमारी कॉन्शियसनेस आई थिंक एज अ कलेक्टिव काफी बढ़ी है। और जो आप जैसे लोग हैं जो कि इन द टीनेज ईयर्स हैं या इन द अर्ली 20s हैं, उनके लिए ये बहुत ही आई थिंक अहम वक्त है टू सी दिस सो अर्ली, एंड टू ये सारे सबक इतनी जल्दी सीखना एक जबरदस्त चीज है। फिर मेरे लिए एज पर्सनली एज अ आर्टिस्ट तो बड़ा बहुत ही अच्छा वक्त था कि मुझे और कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपने आप के साथ डील करना था। सिर्फ जो सारा जो नॉइज होता है ना मार्केट का और ये सब कुछ, वो बिल्कुल धीमा पड़ गया था, और सिर्फ अपने अपनी आवाज सुनने का मौका मिला मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचना पड़ा। और इवन कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि कभी कभी आप इतने बिजी होते हो कि आप अपने आप से वो बात भी नहीं कर सकते हो जो कि आप मतलब यू कांट एक्चुअली बी सैड ऑल्सो। So it also allowed me to express my sadness. It allowed me to express my thing to myself, which was very important to me. So बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा ही है। अपने से बात करने का मौका मिला, बहुत लाइफ बिजी हो जाती है और हाबड़ ताबड़ लोगों से मिलना जाना इधर उधर, और आपका काम स्पेशली आप जितनी मेहनत करती हैं अपने काम में, उसमें इतना टाइम लगता है, एक बंदे से मिलना, दूसरे से मिलना, ये वो मीटिंग्स वगैरह सारा कुछ। तो फिर वो जो है ना, उसमें बंदा अपने आप को कहीं भूल सा जाता है। तो जब अपने आप से बात करने का मौका मिलता है, नेचर से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो वो काफी ज्यादा सूदिंग होता है, रिफ्रेश बटन दब जाता है। Absolutely. तो नाउ वी वुड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज and song Roche from Coke Studio amazing. I really like to listen how difficult are live singing sessions in Coke Studio. Thank you, Gibran. Gibran, I do a lot of live. Thank you so much. For live singing, for me, because I learn how to sing. So you know, some singers are more adept at studio singing. Some singers are more live singing because वो ज़्यादा Hmm. performances करते हैं. So I've been lucky कि मैं because studio में अभी काफ़ी काम कर चुकी हूँ, so I'm comfortable with studio singing also. लेकिन live singing Hmm. I enjoy very much क्योंकि मैं ज़्यादातर singing live ही करती हूँ. तो क्योंकि मैं परफॉर्मेंसेस में Mm-hmm. लाइव गाती हूँ, मैं ट्रैक्स के ऊपर कभी नहीं गाती हूँ. एंड आई ऑल्सो लाइक टू Mm-hmm. द वर्ल्ड वे ऑलवेज हमेशा बैंड के साथ ही, और अमेरिका में भी मेरा बैंड रहा है, तो बैंड के साथ लाइव गाना Hmm. मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है. सो फॉर मी इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स नॉट सुपर डिफिकल्ट. एंड देन कुक स्टूडियो, इट्स Nice. you do quite a few takes and then the best take is chosen, so it's not Mm-hmm. so difficult. And I was also around friends, so yeah, all the Hmm. musicians there are my friends. Hmm. माशाल्लाह, वेरी नाइस। एंड और वो जो मुझे याद है दिलरुबा नराजी में, और आपका जो थी ना केमिस्ट्री जो साथ चल रही थी उनके साथ, फसी साहब के साथ, वो तो नेक्स्ट लेवल थी, बहुत ही जबरदस्त किस्म की थी। थैंक यू. हाँ जी, वो बहुत ही ही सच अ ग्रेट सिंगर. मैं तो एक्चुअली उनकी काफी बड़ी हम्म। फैन रही थी when I was your age and a हम्म। little older. So I used to be a big fan of his, and finally हम्म। I met him and he said we should do a song together. I said yes, of course. Yeah. So, Very nice, mashallah. So it was an awesome session. thank At you. last, I would like to ask you that what would be the message for the world listening uh, anywhere in the world? What do you think is important to be heard from the viewer or anyone? Just something the other need to be identifying, or something others need to be listening to. कुछ भी ऐसा हो जो इम्पोर्टेंट लगता हो, बेशक ऑफ टॉपिक हो, ऑन टॉपिक हो, कोई भी बात हो, अपनी नेचर से हो या कोई भी ऐसी बात हो, आप दिल से जो निकले इस टाइम मैसेज वो दे दें पाकिस्तान के लिए या दुनिया के लिए। अच्छा. जी। चलिए फिर, you know what I'll do? I'm not very good with what I can do is I can maybe sing a song for you, ओह, वेरी नाइस, and दैट I'll वुड tell बी अमेजिंग। इतनी बातें मैंने कर ली है, so I'll just I'll just एक्चुअली आई एम करेंटली थिंकिंग दैट आई टॉक अ लॉट, बट आपको ऐसा क्यों लगा? या। so धड़कनों की ताल बाजे, सांसों का एक तारा, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा, चलो बांट ले हम जिंदगी जरा, आज यूं कर ले, कहो क्या ख्याल है, एक जहां छोटा सा अपना, एक जहां तुम्हारा, मुस्कान चाहे मीठी हो या आंसू एक खारा, चलो बांट ले हम और खुशी थोड़ी गुफ्तगू कर ले, कहो क्या ख्याल है.
Very nice, mashallah. Very, very nice. Thank And I'm really grateful to be listening to you live, directly live, mashallah. thank you I so much. feel Thank so you, blessed. Rahim, and thank you to Most welcome. um, all your friends who tuned in. It was really, really nice to Yeah, spend yeah, time. exactly the same from me. Thank you so much, everyone. And thank you so much, specially for your time. Inshallah, if possible, next time, inshallah, we will do a physical interview जिसमें मैं मैम जेब से मिलूंगा इंशाल्लाह वो प्लान हमेशा हमने रखना है Inshallah. जल्द हो या अब देर हो मुझे नहीं पता इंशाल्लाह वो ड्यू so thank you so much for joining and everyone who's watching I would like to say if you want to follow her on Instagram do that and just good comments just tell her about what do you feel about her and if you want to ask something about me then you might should check the description box you will see details about me and मैम ज़ेब बख्श के बारे में भी कुछ डिटेल्स मैं इकट्ठी करके डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा और इंशाल्लाह I'll see you in the next one and till then take care मेरे पेज है फेसबुक पेज इब्राहिम टॉक्स के नेम से उसे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं मैम आपने कोई भी पेज या कोई भी ऐसा कोई आपका कोई काम हो या कोई भी चीज हो जो आप चाहती हो कि मेरे व्यूअर्स उसे चेकआउट करें तो यू कैन टेल दैट Please check out my Instagram, my Facebook, my Twitter. And this year, I'm going to come up with a lot of new releases. And I'm also planning to do a lot of live इंशाल्लाह singing there. So if you want to follow me there. वेरी नाइस yeah that would be amazing you should follow and inshallah I'll catch you in the next one till then take care Allah Hafiz stay Allah. connected